This is very unfortunate. This is a very landslide prone area. The major landslide happened even in the last 3-4 years ago now, and this is one of the lifeline of the Nagaland as well as Manipur. So it is very important that we should restore this road as early as possible. Now I shall take up this matter with NHIDCL, but I don't know whether I'll be able to get these people. We'll request them to restore the road as early as possible. Yeah. We have one parallel to the bypass road is coming up here, but I don't know what is the problem, why the project has been delayed, the work is not doing now. Had it been this road being completed, this could have been a little east to this very national highway. The only alternative now is the NHIDCL has to work day and night and has to restore because the land has to be compensated and then they have to acquire the land and then they have to consult with the villagers. Otherwise, as of this, as I've said, lifeline of most of the villages of southern Angami area and then Manipur has been totally cut off now. This water source is here. So I think the main cause for this landslide is probably because of the sources water sources that are available here. As such, this area is, as I've said, it's a landslide prone area, and this need to be scientifically investigated, and then some concrete decision has to be, some concrete word has to be taken up. Landslide prevention. That I cannot say, but alternative road has to be restored. One, as I've said, actually this road should not have been pending for so long. But the NHIDCL and the contractor, what is in between them, I do not know. So the work is not going now. The progress of the road is very... Yeah, in spite of the road damage, the students have been badly affected. Now we have a small road up here, above this road, we have a small road. In whatever way, I don't know, these people, they are managing to attend their classes, but some students are attending with very hardship. They are facing hardship to attend the school. They are having the exam. That's why lots of problems they are facing. I don't know how the school authorities are arranging the alternative transportation. That I don't know. My name is Via Kotsu and I am the president of the Pesama Youth Organization. Well, as we all know, that our road, which is the lifeline of this entire southern Angami village and the state of Manipur as well, the National Highway Road number 29 has been totally cut off from the rest of the state. So, like we said, Kali Prosantan, it also started on Saturday. So the sinking zones, this is obviously a sinking zone, but like it started on Saturday and then it was severely, affected yesterday since Sunday morning. So somehow with some assistance from the local people, we have managed to take care of some properties. Properties can gari kan kumpadu damage hoise. By God's grace, human casualty they could take, so we are very thankful to God for that. So as we all know, our area has been affected. Lots of cars have been stranded. The district administration was here this morning. The SDO Civil Jahama along with his colleagues, and also the president and colleagues of the Southern Angami Youth Organization was also here this morning. So we took note of the situation, and then we had a healthy discussion with the district administration, and then I believe the wisdom of the district administration will come in handy and will surely help the people who are stranded here. So like we said, the stranded people, starting from the buses, the wingers have been transported safely with some alternative arrangements, and some are still on the process, but most of them have been able to arrange alternative transportation. So we're happy for that, but as we all know, the trucks are still stranded here. So as
we have been told around 170 trucks are stranded here. So the Pesama Youth Organization, along with the Pesama Village Council, and have been trying our best to assist and help the stranded people to be as comfortable as they can while they are here. And as we all know, last night the Pesama Baptist Church, the Pesama Baptist Kresara Koto have provided tea and snacks to the stranded passengers, to the stranded truckers or any traveler who are stranded here. So even this morning, our village council have been very thankful, very gracious to provide refreshment, water, snacks, and juice, etc. So we are very thankful to our village council also. So like we said, the travelers are very much affected, but our local people, especially the students who are studying in Jaffa Christian College and St. Joseph College, Jakhama, has also been very badly affected, and we are told that they are in the midst of the examination. So what the Pesama Youth Organization did to help them was we have arranged our local grounds for their bus parking. So once they reach Pesama, their buses are parked here in our Pesama local ground. After which the college authorities have also arranged their transportation to ferry them from this side till their college. So so far that those are the things that are going on. And then we have an alternative route, as we all know, starting from Dimerkov via Kisama, via Rododendron Resort, which ends here down here in Pesama. So the light motor vehicles are comfortably plying in that, and we have been very thankful to some of our members from Pesama village who have assisted us with their machineries, and our volunteers are here. We have deployed our volunteers to assist the travelers and the stranded passengers to make their stay or to make their travel as comfortable as possible. So that is that. And this morning we have also spoken to the NHIDCL. So what the NHIDCL is what we have told them is that we the Pesama Youth Organization will give our full support to any decision that they come up with, because we are in technical field, we lack their knowledge and their wisdom. So we also have appealed to the NHIDCL. So we hope that they will come up with the best of their technical supervision and continue with their work, and this road will be settled once and for all, so that this kind of incident doesn't happen in the future again. So we strongly urge the government and the NHIDCL to render the fullest of their technical support and with the best of their working mechanism to finish the road as soon as possible, so that the people may start to live a normal life again. Especially like I said before, the road is the lifeline to Manipur state. So we believe everything will go well in time. Thank you. टॉयलेट जाने का सुविधा नहीं है यहाँ पे, और खाना पीने का असुविधा हो रहा है, और यहाँ जैसे हम लोग का माल भी भीज रहा है, ये सब दिक्कत हो रहा है हम लोग को। टाटा में गला माल लोड है और इम्फाल का माल लोड है। अच्छा, कितने दिन हो गए? कल सुबह पहुँचे हैं हम लोग, कल रात्रि 8 बजे पहुँचे हैं। मतलब सुबह में हम लोग यहाँ पे आके देखा तो गाड़ी तो सही सलामत था उस टाइम में। 3 गाड़ी था, एक बालू गाड़ी था, 2 सीमेंट गाड़ी था, और उसके बाद में वो 2 गाड़ी निकल गया, एक गाड़ी उसमें चला गया। अभी हाल फिलहाल में जो अभी आप लोग का सामने में जो आप लोग भी देखे हैं, जो रास्ता का कंडीशन है वो आप लोग भी देखे हैं। पीछे बैठ के खा रहे हैं। हम लोग का तो DCM गाड़ी है, उसमें हम लोग खाना बना भी नहीं सकते हैं, खुद से सो भी नहीं सकते हैं। तो उसमें कुछ आप लोग कीजिए कि रास्ता जल्दी निकल जाए। सरकार से यही हम लोग मांग करेंगे कि रास्ता जल्दी निकले, हम लोग यहाँ से निकलने का कोशिश करें। कच्चा माल है तो उसमें टाइमिंग होता है, लेकिन अभी टाइमिंग रास्ता की वजह से टाइमिंग हम लोग वहाँ पे फ़ोन करके बोल दिया कि टाइमिंग हम लोग के पास में कोई टाइमिंग नहीं है। एक गाड़ी गेहूँ था, एक में सीमेंट था, एक में बालू था। 3 गाड़ी था इसमें पड़ा हुआ, एक 6 चक्का था, 2 16 चक्का, जो 1 16 चक्का भी पड़ा हुआ है। सीमेंट लोड है। आज 3 दिनों से इधर ही बैठा हूँ, रास्ता का कुछ खबर ही नहीं है। पूरा तो अपने खाना पीना कहाँ से मिल रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। दुकान से कहीं मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा तो हम लोग का टॉयलेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे कितना लोग है? आप सब मिलाकर? हम लोग का तो गाड़ी है यहाँ पे।
कम से 200 तो होगा गाड़ी का, 500 से ऊपर हो जाएगा इधर में तो। तो दूसरे 500 से ऊपर 500 से इधर गाड़ी है, 500 उधर भी गाड़ी है, 1000 गाड़ी से ऊपर गाड़ी है। 1000 गाड़ी के ऊपर हो गया। 1000 गाड़ी से ऊपर, खाली गाड़ी 500 से ऊपर है। इधर में है 500-700 आपका लोड गाड़ी पड़ा हुआ है। खाली गाड़ी को इधर जो इम्फाल से आने वाला है वो अभी फोन से पता चला है कि तदबी पार कर गया होगा, तदबी का उधर तक पहुंच गया है। और इधर में हम लोग को पता चला है कि वो न्यू रिजर्व गेट है, वहाँ तक गाड़ी आपका लोड गाड़ी पहुंच चुका है। इस जगह में 2012 में हमने देखा था, 2012 में एक बार और इसी जगह में हुआ था। उस टाइम में भी हम लोग इसी जगह में फंसा हुआ था और आज भी इसी जगह फंसे हुए हैं। उस टाइम में टॉयलेट का हम लोग को सुविधा नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो बस्ती वाला लोग था वो लोग हम लोग को मतलब पैसा लेके चाहे जैसे भी उस टाइम में यूज करने देता था लोग। अभी हम लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम टॉयलेट का वजह से नहीं खा पा रहे हैं। टॉयलेट की इतना सुविधा है कि मतलब हम लोग खुद से मतलब खाना नहीं खा पाते हैं कि रात बिरात को होगा तो कहाँ जाएंगे, इधर नाला तरफ जाएंगे तो लोग डंडा मारता है। यही हम लोग का असुविधा हो रहा है। जो गिरा हुआ है ये गुवाहाटी की गाड़ी है। हाँ, वो जाते समय लैंडस्लाइड हुआ या वो पहले से फंसा हुआ था, पहले से फंसा हुआ था रास्ते की वजह से? उसका गाड़ी से माल भी आधा मेरा गाड़ी में ही उठाया है। ओके, वो पहले से फंसा हुआ था थोड़ा हल्का, धीरे उसका बाद में आपका कहता है कल मेरा गाड़ी में आधा माल पलटाई किया, आधा माल मेरा गाड़ी में देते देते पूरा फंस गया, दे दिया और आधा माल नीचे में ही है, आधा माल नीचे ही है। ইমতিয়াজ হাসান আছে, মই একজন স্প্লাইচাৰ আছে এয়াৰটেল কোম্পানী লগা। তো ইয়াতে লাষ্ট ডে শ্লাইডিংতে মোখান লগা কেবল বি দুইটা যাইছে। তো এইটো কাটতে পৰা মোখান লগা 90 নিচিনা সাইড ডাউন হৈ না আছে, আলাগ আলাগ সাইডতে। তো কোহিমা মণিপুৰ লগা কিমান নেটৱৰ্ক আছে, মোবাইল নেটৱৰ্কখন সব ডাউন হৈ না আছে। তো এইটো সাইড মানে তো আজিকালিতো নেটৱৰ্ক বি শ্ল' থাকিব, 4G 5G অলপ কমতি পাই না থাকিব। আৰু কল কৰা টাইমতে ভি ফোনখন কাট হ'বলৈ বা কথাখন ঠিক নাশুনিবলৈ না কিছু চান্স আছে। তো এতিয়াতো মোখান টেম্পৰাৰী আপ কৰি দিব, 1 ঘণ্টা নিচিনা ভিতৰতে আপ হৈ যাব টেম্পৰাৰী। তো এইটো ভি পাৰ্মানেণ্ট কৰিব নিমিত্তেতো অলপ টাইম বেছি লাগি থাকিব, কেতিয়াতো চল্ভ হ'ব না। এইটো পিছতেহে মোখান ভি পাৰ্মানেণ্ট কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা আছে।